Okay, right. So जैसा abstract class है, similar is the interface, same concept. Interface is also used to create abstraction, right, in Java, or yes, in Java in this particular case. Right, now again, what is interface? Interface again means, or abstraction in short, what it means, that showing or displaying only the required things while hiding the implementation details. And why hiding? Not for any privacy, nothing of that sort, but simply hiding because those are not required. Right? As I always give the example, how does the fan start? Fan starts by clicking the button, और on and off ये दो ही फंक्शनैलिटी होती है वो बटन में. राइट, तो उससे फैन शुरू होता है, और हमें फैन से उतना ही मतलब है शुरू और बंद करने में, उसके सिवा कोई मतलब नहीं है. अंदर क्या इलेक्ट्रॉन फोटोन चल रहा है, वी डोंट केयर. राइट, दैट इज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन. या अपनी बाइक कैसे स्टार्ट होती है, सिंपल किक से या तो बटन दबाने से. राइट, सो वी शुड ऑलवेज इंश्योर कि एब्स्ट्रैक्शन कौन से केसेस में ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है. राइट, सो इन शॉर्ट कोई भी एब्स्ट्रैक्शन रहेगा तो उसमें क्या होगा, एक एक्सटर्नली एक क्लास दिखेगा विच प्रोबेबली वुड बी से अ टॉप लेवल क्लास. राइट, क्लास और एन इंटरफेस. अभी इंटरफेस पढ़ रहे हैं इसलिए इंटरफेस भी. उसमें कुछ फंक्शंस रहेंगे विच डिफाइन अ स्केलेटन, कि आप इस पर्टिकुलर क्लास में से जब भी कोई क्लास डिराइव करोगे, क्लास या इंटरफेस में से जब भी कोई चाइल्ड बनाओगे, राइट, तो बाय डिफॉल्ट आपको इतने सारे फंक्शंस उसमें लिखने ही लिखने हैं. राइट, और ये इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो उसमें होने ही चाहिए. राइट, दैट इज व्हाट इट मीन्स. Right, now let's take an example of interface. Right, now what I have done is I have created a new project. I have called it as interface demo. What I'll do is a new, say, Java class in which I'll say app.app. इसमें अपना main रहता है. Then we'll have I'll create a new. I'll take the same shape वाला example. In Java class, click करके I'll click interface here, interface, and here I'll write shape dot. Right, so if you have a closer look at it, what you would say is कि you would see एक शेप नाम का पैकेज बनेगा, उस शेप में एक इंटरफेस बनेगा अगेन हुज नेम इज शेप. क्यों स्लो गई साला रिकॉर्डिंग, आई डोंट नो. प्रोसेसर लैग कर रहा है. हाँ, 1 minute. I'm not sure what is using the CPU so much. Just a minute. क्रोम ले रहा है 25, ऑडियो डिवाइस मैनेजर और डेस्कटॉप विंडोज़ मैनेजर जो है वही ज़्यादा लेते हैं. वो भी ये स्टूडियो थोड़ा सा ले रहा है. चलो एनीवेज, लेट्स नोट दैट. ओके, राइट, सो इफ यू सी की interface, what has happened is instead of using the keyword class, I am using the keyword interface. That is what I am using. यानी हमने जब इंटरफेस बनाया है तो क्लास के बदले वो इंटरफेस कीवर्ड instead of using the keyword class. Right? Next is inside this get area. Right? Because I am just creating one function. Now by default, all the functions of an interface, they are abstract. By default, all the functions of an interface, they are abstract. तो तुम्हें abstract लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें.
I write abstract, ठीक है, उसने लिखने तो दिया लेकिन नहीं भी लिखा तो भी दे आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट. व्हाट इट मींस, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन is that whenever you derive a class from an interface, right, it will become compulsory to write the definitions for all the functions of that interface. Right, so what I'll do is I'll create shape. I'll call it shape. Sorry, circle, not shape. The same package shape, I have created a class circle. Now I have to make this circle a child of our interface shape. Right, now keep one thing in mind, that a class extends a class, but a class implements an interface. So इसमें तो have to write the keyword I'll say implements shape. Right, implement shape तो हो गया. Right, now in the same package it won't ask me for importing it, right, but it is still, why is it showing me in the red? Because we have not implemented its the interface shape, or all the functions of an interface, they are abstract, so it becomes compulsory to write the implementations. Now if I write the implementation here, I can write public area. This stopped crying, and I can simply say private int radius. Inside get area, I can simply say 3.14 radius into radius. Right, so now there is no error. Right, what it means, or what you need to understand is that ये इंटरफेस किस लिए यूज हो रहा है, क्या शेप दिखेगा, राइट, विच इज एन इंटरफेस. राइट, अगेन यू कैनॉट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास शेप, राइट, you simply cannot. Object of an interface as well. Abstract class क्या और interface क्या, एक ही बात है. राइट, सिर्फ थोड़ा सा सिंटैक्टिकल डिफरेंस है. देन ऑल द फंक्शंस, जैसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस, बट एन इंटरफेस कैनॉट कंटेन नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस. राइट, ऑल द फंक्शंस ऑफ द इंटरफेस, they would by default be abstract. Right, now let's see, you can create a constructor inside. Right, अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है कि इट इज नॉट अलाउड इन एन इंटरफेस, सो यू कैनॉट एन इंटरफेस, कैन क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट. राइट, सो ये है, बट ऑल दोज डिफरेंसेस दे आर सिंटैक्स. राइट, फंक्शनली बोथ सर्व द सिमिलर पर्पस और सेम पर्पस, इन्हें एक ही काम के लिए यूज होते हैं, विच इज एब्स्ट्रैक्शन. राइट, नाउ जैसा हमने वो एक हियरार्की बनाया हुआ है, राइट, शेप के नीचे में सर्कल, राइट, देन शेप के नीचे में एक और इंटरफेस विच इज क्वाड्रिलेटरल. सो आई विल डू इट. व्हाट आई डू इज आई विल क्रिएट अनदर इंटरफेस हियर. आई विल सेलेक्ट इंटरफेस एंड हियर आई विल कॉल इट क्वाड. तो एक पब्लिक इंटरफेस क्वाड बन गया. नाउ आई हैव टू मेक दिस क्वाड अ चाइल्ड ऑफ, राइट, because this is an interface, right, you have to keep few things in mind. First thing is that a class extends a class, right, but a class implements an interface,
And third important thing is an interface extends an interface, right? So I'll simply write extends shape. Now because I have written extends and because this quad is also an interface, right? It is an interface, it cannot implement anything. क्यों implement नहीं हो सकता? Because interface के सारे functions जो है they would always be abstract, so you cannot write definitions for those functions, right? So an interface will only extend the shape, right? And it can add its own functions if they are required, right? But those functions will also be by default abstract, right? Now if I derive say another class, say square, and if I say because a class implements an interface, I say implement quad, right? So become compulsion for the for एट द एंड क्या हुआ है कि स्क्वायर क्वाड से डिराइव हो रहा है एंड क्वाड इज गेटिंग डिराइव्ड फ्रॉम शेप, राइट? बिकॉज shape has an abstract function, right? We'll have to write the definition for the abstract function. I'll have some right, and I'll have to implement that function get area and return side into side. Right, so this becomes मीन्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? जो काम हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास से किया वही काम हम लोग इंटरफेस के थ्रू कर रहे हैं, राइट? सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन इंटरफेस, बट इट इज बेटर टू यूज इंटरफेस इफ वी डू नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशंस इन आवर क्लास. कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब इफ वी हैव एनी नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस तो we should use abstract class, otherwise we should use an interface, right? At the end, abstract class as well as interface, why are they used? They are used implementing abstraction. What is abstraction? Again, abstraction means hiding the implementation details, right? Another important thing about interface is that multiple inheritance, it is not allowed in Java when we are dealing with the classes, right? But multiple inheritance is allowed when you are having interfaces, right? तो interfaces के through आप multiple inheritance कर सकते हो. What is multiple inheritance? Multiple का मतलब कि when we have multiple parents. For example, let us take or let us create an interface. I'll call it say could be test. तो ये एक इंटरफेस है जिसमें void fun, तो मैंने सिंपल एक इंटरफेस बनाया टेस्ट नाम से जिसमें मेरे एक ही फंक्शन है विच इज फन, पब्लिक void fun. Now this function is nothing but an abstract function. Why? Because all the functions of an interface, they are abstract. I'll create another class. I'll call it say child. Now class implements an interface. So I'll say implements, right? Implements quad, comma, right? तो इससे क्या हो रहा है कि one class child, one is quad and another one is test. What it means that you can have you can create multiple inheritance in Java interfaces, right? लेकिन ये केस में क्या होने वाला है कि आपको के जो
फंक्शंस है उनको भी डिफाइन करना पड़ेगा एंड टेस्ट के भी जो फंक्शंस है उन्हें भी डिफाइन करना पड़ेगा. तो इन चाइल्ड यू राइट पब्लिक एक पब्लिक वॉइड फन जो कि टेस्ट का है एंड अनदर वुड बी पब्लिक डबल गेट एरिया. कर दोगे इन दैट केस क्लियर. Yes, sir. Okay, I'll stop the